In this lesson, we are going to learn about sources of Hindu law. पिछले पार्ट में हमने देखा एंशियंट सोर्सेज, इस पार्ट में हम देखते हैं मॉडर्न सोर्सेज। फर्स्ट है इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइंस, सेकंड है प्रेसिडेंट, थर्ड है लेजिस्लेशन। तो ये सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ हैं, हम लोग देखते हैं वन बाय वन। मॉडर्न सोर्सेज में हिंदू लॉ हैज़ बीन ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय ब्रिटिश रूल, while it might seem that British brought with them the modern concept of equality, justice, but these concepts were existed even in धर्मशास्त्र in different form. ये ऐसा प्रतीत होता है कि ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस ने ही इक्वलिटी, जस्टिस वगैरह लाया, बट ये हमारे यहाँ धर्मशास्त्र में पहले से था। इट वॉज मैंशन इम्पोर्टेंस ऑफ धर्म, righteousness in delivering justice. However, we did not have a practice of recording the cases and judgment delivered, so it was not possible to apply stare decisis. हम लोग देखेंगे बाद में stare decisis क्या है। This process started from British rule. The following are the modern source of Hindu law: equity, justice, and good conscience. Equity means fairness in dealing. Modern judicial system greatly rely on being impartial. True justice can be delivered through equity and good conscience. In a situation where no rule is given, a sense of reasonableness must be applied. जहाँ पर कोई रिटर्न लॉ नहीं है, रूल नहीं है, वहाँ पर रीजनेबलनेस को देखना चाहिए कि क्या रीजनेबल होता है। According to Gautama, in such situation the decision should be given that is acceptable to at least 10 people who are knowledgeable in Shastras. Yajnavalkya had said that wherever there is conflicting rule, the decision must be based on nyaya, that is natural justice and natural equity and justice. This principle has been followed by Privy Council while deciding cases. Equity, justice and good conscience was established as a source of Hindu law by the British administration of justice in India. British government directed the High Courts to decide the cases in accordance with equity, justice and good conscience on the matter where the law was silent. In Gurunath versus Kamlabai, Supreme Court said that the court have authority to decide the cases under equity, justice and good conscience where there is absence of any rule of Hindu law, but it must not be inconsistent with any theory of Hindu law. इस केस में इक्विटी, जस्टिस और गुड कंसाइंस को एक तो प्रमाणिकता दी गई, बट ये भी कहा गया कि वो थ्योरी ऑफ हिंदू लॉ से इनकंसिस्टेंट यानी उससे अलग नहीं होना चाहिए। प्रेसिडेंट, जुडिशियल डिसीजन ऑफ एंशिएंट टाइम्स वर नॉट रिकॉर्डेड एंड रिटन एनीवेयर। अर्लियर देयर वाज नो सिस्टम टू रिपोर्टिंग ऑफ केसेस। पहले जो है कोई लिखा पढ़ी तो होती नहीं थी जुडिशियल केसेस की, तो अब जो है प्रेसिडेंट एंड स्टेयर डिसाइसिस आर गिफ्ट ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ जस्टिस इन इंडिया. Precedent is known as the source of Hindu law because all the important principles and rules are recorded in case laws. Now only reference to the leading decision is enough. No need to find out original source. Precedent is known as source of Hindu law because all the doctrines, principles and rules can be modified by the process of judicial interpretation. But this is a big concern for precedent as a source of law. Although the judiciary is not a law-making authority, but in the process of judicial interpretation, judiciary does make law. कुछ एक कंसर्न ये भी है कि प्रेसिडेंट में जो है हम जो पहले से केस पर डिसीजन हो चुका है उसी आधार पर आगे भी डिसीजन दिया जा सकता है, मगर ये एक कंसर्न भी है कि जो है जुडिशरी जो है इसका गलत इस्तेमाल भी कर सकती है। British administration of justice in India was not able to understand the language of Dharmashastra and they were not well tuned with the spirit of Hindu law. Thus, the correct judicial interpretation was questionable. Today, the doctrine of stare decisis is part of Indian law. According to this doctrine, this stare decisis क्या है? तो according to this doctrine, decision of Supreme Court is binding to all courts, though Supreme Court is not bound by its own decision. Supreme Court का जो डिसीजन होगा उससे जो भी कोर्ट है सारे कोर्ट्स को बाइंड होना पड़ेगा, मगर सुप्रीम कोर्ट अपने डिसीजन से बाउंड नहीं है, वो चाहे तो अपने डिसीजन को चेंज कर सकती है।
लाइकवाइज हाई कोर्ट डिसीजन इज बाइंडिंग टू ऑल सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। इसी तरह हाई कोर्ट का डिसीजन जो है उसके सभी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में बाइंडिंग है। दो हाई कोर्ट डिसीजन इज नॉट बाइंडिंग टू अनदर हाई कोर्ट्स, लेकिन कोई दूसरा हाई कोर्ट किसी अदर हाई कोर्ट के डिसीजन से बाउंड नहीं है। लेजिस्लेशन इज मॉडर्न सोर्स ऑफ हिंदू लॉ। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल the government was cautious and slow. They were not in favor of changing Hindu law by legislative intervention. However, changes in Hindu law during British rule were very important. Before 15th August 1947, they modified Hindu law either by reforming Hindu law or by superseding rules of Hindu law. The earliest statute was passed in 1850, the Caste Disabilities Removal Act. In 1944, Rao Committee recommended a uniform code of Hindu law. Hindu Code Bill was introduced in the interim parliament, but it lapsed with the dissolution of parliament. सबसे पहले हिंदू कोड बिल जो है इंटरिम पार्लियामेंट में लाया गया था, लेकिन वो पार्लियामेंट जब डिसॉल्व हो गया तो वो भी लैप्स हो गया। Hindu Code Bill was opposed by some orthodox section of Hindus. Government decided to split the Hindu Code Bill into 4 parts and pass it in installments. The 4 codified Hindu law are Hindu Marriage Act 1955, Hindu Succession Act 1956, Hindu Adoption and Maintenance Act 1956, and Hindu Minority and Guardianship Act 1956. Wish you happy learning. Please like this video and don't forget to subscribe this channel. It is totally free. Thank you.